Hello everyone. So, hello all. So, hello ମୁଁ ସୁଦୀପ୍ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ OPSC ର ଆଜିର ଚ୍ୟାନେଲ କୁ। ओके सो आज आम डिस्कस करिबा इम्पोर्टेंट PYQ डिस्कस करिबा जोड़ा कि प्रीवियस ईयर जनरल साइंस रे हमर ऑलरेडी क्वेश्चन आसी सारी छि एंड आगो को अपकमिंग एग्जाम्स रे भी आसी पारे. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर कमिंग एग्जाम जो माने भी दउचंदी समस्त पई बहुत ही इंपोर्टेंट. सो लेट न करिके आमे हमर फर्स्ट देखिबा क्वेश्चन आंसर कोन अछि. बिफोर दैट आपण माने जदि स्टडी आईक्यू ओपीएससी को एनरोल करबा को चाहउचंदी देन प्लीज डू यूज माय कोड SSP live so that आपण इजीली डिस्काउंटेड प्राइस सहित अवेल करि परिबे मो बैच को. किछि भी बैच को आपण अवेल करि परिबे बाय यूजिंग माय यूज कोड SSP live. एंड आमर बैच रखुची जोड़ा कि ओडिशा पीएससी रो प्रिलिम प्लस मेंस रो फाउंडेशन बैच विथ द डिस्काउंटेड प्राइस 11,999 एंड आमर ओडिशा पीएससी रो मेंस क्रैश कोर्स जोड़ा रहुची 6,499 एंड मेंस कॉम्बो बैच जोड़ा रहुची 4,999 एंड आमर मेंस रो टेस्ट सीरीज रहुची 3,499 एंड प्रीलिम फाउंडेशन बैच रो 4,999. यूज SSP live and avail the discounted price. Okay, so first question of the class कौन अछि देखिबा. जेमति कि म आपन कहिली आमे जते इंपोर्टेंट साइंस क्वेश्चन देखिबा आज रो क्लास रे. सो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अछि. व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन. hello धर्मेंद्र. So what percentage of carbon is present in steel. So steel ले केते परसेंट रो कार्बन प्रेजेंट अछि. The options are 0.00 to 2.5 or 2.5 to 5.0 or 5
to 7.5 or 7.5 to 10. So amara kette percent rahuchi? So the right answer will be what? First आमे आंसर देखिबा. ओके सो आमर केते रहिबो गाइस 0.0 to 2.5 हबो एक्जेक्टली 2.1 रहउची. जदि ऑप्शन वाइज आपन को देखा जिवो ताहाले आपन देबे 0 to 2.5 देबे. ओके very good evening to all. ओके सो आमे देखिबा टाइप्स ऑफ कार्बन्स. ओके कोन अछि जोटा कि देखंतु स्टील आग फर्स्ट देखंतु कोन अछि स्टील टाइप्स ऑफ स्टील. These are two types which is carbon steel and alloy steel. Again carbon steel को हमरो डिवाइड करा जाई छी थ्री टाइप्स रे. कोन अछि लो कार्बन स्टील जोटा को हमें माइल्ड स्टील बोली कहू छे, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील. अगेन हमरो alloy steel को केतेटा डिवाइड करा जाई छी ना फाइव टाइप्स रे डिवाइड करा जाई छी. दिस इज स्टेनलेस स्टील, हीट रेजिस्टिंग स्टील, स्प्रिंग स्टील, सिलिकॉन स्टील एंड टूल स्टील. So low carbon steel contain करे केते ना 0.3% of carbon, but medium carbon steel हमारा केते contain करे 0 to 0.3% starting हैला low रू, then medium, then high. So medium हमारा केते हबो 0.3% to 0.6% of carbon. Again हमारा कोन होची ना high carbon steel, this is 0.6% to 1.4%. तो basically आपण मने रखि देबे 0.3. Again then asibo 0.6, then asibo 1.4, then apan dako okay starting ru 0.3, then 0.3 to 0.6, then 0.6 to 1.4% of carbon present inside steel. Okay, so next question dekhiba. What are female gametes called as? What are the female gametes called as? Options are zygote, sperms, embryo or ova. कौन अच्छी female gametes को कौन कहा जाए? This is called ova, or यदि ऑप्शन ने हमारा कौन थिबो egg cell, you can say that egg cell will be the correct also. Okay, and the male one is sperm. So next देखिबा. So female gamete जोटा कि हमें ओवम कहूचे, एग कहूचे, तो तार कंसिस्टिंग पार्ट कौन रहूची, सेमति केमति कंस्टाइलेशन होउची. तो this is the picture of that. Okay, so next question is, which among the following constitutes the central nervous system in human body? Central nervous system, or we can say CNS. तो हमारा किए कंसिस्ट करूची ओनली ब्रेन, ओनली ब्लड और ओनली स्पाइनल कॉर्ड, और बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एटा कौन हबो? दिस इज बोथ व्हाट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ओके, so brain रहुछ हमर कोन, the brain control the body's function like thinking and learning and movement etc etc. हमर blood रो तो आपण माने जानि थिबे, without blood we cannot move, and blood हमर कोन रहिबो. then हमर spinal cord रहुछि जोटा कि the spinal cord carries message between the brain and the nervous system. so एटा रहुछि हमर both brain और spinal cord function, and protection भी दोछि हमकु brain and spinal cord, जेमति कि the brain is protected by the what skull. in the same way the spinal cord is protected by the vertebrae. कौन ना vertebra. okay, so next देखिबा. the brain रो हमर चारिटा लोब अछि. these are also important for exam. जेमिति कि हमर
parietal lobe, frontal lobe, temporal lobe and occipital lobe जोटा कि like next question हमको आसुची question भीतर हमें discuss करि देबा. So next question कौन अछि? Okay, so consider the following hormones: estrogen, progesterone, testosterone. Which of the above is are classified as female hormones? तो तीनिटा hormones हमको देइची. What are those? Estrogen, progesterone, testosterone. तो भितरु female hormones कोडा देखंतु 1 and 3 estrogen or testosterone, or this is progesterone, oh sorry, 1 and 2 estrogen or progesterone, or 2 and 3 progesterone and testosterone, or only 3 or only testosterone. So which will be the right one? This is estrogen and progesterone. So estrogen and progesterone quote achi 1 and 2. So option B will be the right one. Okay. So estrogen को हमारा कौन कहा जाए? First की estrogen होची हमारा primarily female sex hormone कहा को कहा जाए ना estrogen को कहा जाए. Okay. So next देखिबा. So what is next? The part of the stem where a leaf arises is known as. The part of the stem where a leaf arises is known as. तो stem रे जो part रहुची जोठु हमरा पत्रटा start होची ताकू हमें कोन कहबा? Carpel, bod, node or tuber. कोडा कहै जिवो? Image देखि कि मते कहंतु which will be the right answer. Sorry. Ebe कहंतु the part of the stem where a leaf arises is known as what? Known as node. So this is the node and this is terminal bod, and you can say, okay, the places on the stem where leaves form are called nodes. Then internodes and bods and axil, you can have a look. Okay. So what's next? Motor skills are associated with which part of the brain? Motor skills are associated with which part of the brain? So what are the options? Parietal lobe, occipital lobe, जेमति मु आपन कहिली, these are the lobe of the brain which are divided into 4 types: parietal, occipital, frontal and temporal. So ita होची 4 types of lobe. तो हमारा motor skill टा कहा सहित associated रहुची? This will be associated with parietal lobe. ठीक अछि? So the parietal lobe is a part of the brain that process sensory information जोटा कि हम part रे रखे, and such as कोन touch करिबो या फिर किछि प्रेशर पड़ले ये सब जिनस जो आमको लोब को इनफॉरमेशन दिए किछि पेन हेले बॉडी रा टेम्परेचर राइज हेले एंड फॉल हेले ये सब इनफॉरमेशन आमको किए दिए ना पैरिएटल लोब. इन द सेम मैनर आमर ऑक्यूपिटल लोब रा भी किछि काम थाए जेमति कि विजुअल इनफॉरमेशन आम ब्रेन को दबो बाय द नर्वस सिस्टम, एंड इट इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड. जेमति कि देखंदो ऑक्यूपिटल इज देयर एट द बैक साइड ऑफ द brain. In the same way, frontal lobe कौन कहिबो? The motor skills are primarily associated with the frontal lobe. So, sorry for the inconvenience. Amara motor skills are associated with the frontal lobe. Okay, motor skills are associated with the frontal lobe, whereas parietal lobe रे हमर कोन ना brain रे processor sensory information and touch रहिबो, but motor skill is the only technical word you can use in the case of lobes, which is motor skill associated with frontal lobe जोटा कि इमेज रे अछि the front side रे हमर रहिबो. So the temporal lobe is a what? Is a part of the brain that located behind the ears,
आपण देखि परिबे हमर टेम्पोरल लोब कोठ रहिबो ना हमर बिहाइंड द इयर्स एंड इन्वॉल्व्स मेनी फंक्शन इंक्लूडिंग व्हाट मेमोरी एंड लैंग्वेज एंड हमर कोन ना जते इमोशंस अटैचमेंट ए सब जिंस गुडा हमर क्यो इन्फॉर्मेशन जो गैदर करिकि रखे मेमोरी को लाइक स्टॉक करिकि रखे ए सब जिंस की करे ना हमर टेम्पोरल लोब क्लियर सो नेक्स्ट देखिबा which helps in equalizing the pressure on either sides of the eardrum which helps in equalizing the pressure on either sides of the eardrum कि malleus incus cochlear nerve या फिर Eustachian tube कि this is Eustachian tube this is important आपण माने मन रखिबे because which helps in equalizing the pressure of the either side of the eardrum like किछि कथा कहले हमको इक्वाली दीपट कान रे सेमली सुबुची नॉट कि एपटे साइड रे अधिक एंड एपटे कम तो ए जो बैलेंस को मेंटेन करूची किए दिस Eustachian tube नाटा मन रखिबे आपण इटी शॉर्ट फॉर्म रे मन रखिबे सो दैट आपनकर मन रहि जिवो Eustachian tube ओके सो नेक्स्ट देखिबा So, what is the next question? The cells which are closely associated and interacting with guard cells are the cells which are closely associated and interact with the guard cell. Guard cell सहित close relation and daily interaction जो कहि परिबे आपण किए रखुची this is transfusion tissue, complementary cell, subsidiary cell or hypodermal cell. This is the guard cell interacts physically and mechanically with which cell? With subsidiary cell. With which cell? With subsidiary cells. Okay. Next देखिबा transfusion tissue आपण जानि संती is a type of what? Vascular tissue in gymnosperm leaves. In vascular tissue in next देखिबा okay so what is the cell organelle in which the biochemical process of respiration and energy production occurs? So what is the cell organelle? Which part is the cell organelle in which biochemical process and respiration both are held हुए? So कौन हबो? Ribosomes, mitochondria, nucleus or chloroplast? What will be? The mitochondria. So mitochondria are often referred to as an powerhouse of the cell. So mitochondria को हमें कौन आउ कहिबा ना powerhouse of the cell बोली भी ताकू हमें कहू थाए. Okay? So right answer will be mitochondria. So the India and elsewhere biomass can be obtained from India ru to hoji au kouthu amara like India ro kouthu biomass can be obtained sugarcane bagasse or groundnut shell or rice husk or all of the above. बहुत time एटा exam रे आसे so एटा is a must question you have to remember. So कौन हबो? In India, elsewhere, biomass can be obtained from all of the above. Both sugarcane bagasse, groundnut shell and rice husk को हमर कोन biogas formation होउची. एटा मन रखिबे. So how the biomass or bioenergy reformed, you can have a look
from this. Okay. So what is the next question? Which enzyme digests protein in the stomach? Which enzymes digest protein in the stomach? The options are salivary amylase, trypsin, pepsin, or pancreatic canal. What will be the right answer? Tell me in the comment section. The enzyme that digests proteins in the stomach is what? Is pepsin. Okay. And salivary amylase amara in an enzyme that breaks down starch into smaller sugars. तो starch को sugar रे amara convert करे किए ना amara salivary amylase. Then amara trypsin रो कौन काम होची is a digestive enzyme that breaks down proteins into amino acid. एटा कोटे kind of digestive. Okay, but एटा कौन करे ना protein को amino acid रे convert करे. Then amara pepsin जानले is a digestive protein in the stomach, but ये breakdown रे help करे. This is a digestive protein itself. And pancreatic canal, what is its work? The pancreas products digestive juice हमारा कोटू बाहरे ना pancreas रू, so it produces okay. Next, digestive enzymes produced by stomach. What are those? Pepsin and gastric lipase. So pepsin रहुची site of release. देखो तो हमारा gastric lipase तो answer है नथिला, so that अपन confuse है पे नहीं, otherwise अपन both मारी पारी थानते. So next देखिबा. The pouch connected to the junction of the small intestine and the large intestine is called. गोटे pouch अछि जोटा हमर small intestine रू large intestine को connect करूछे. सेटा को कोन कहैबा? Options are condyle, coccyx, या फिर cecum या फिर axilla. कोन कहैबा ताकू? Because it is the right answer will be the cecum is a pouch like structure that marks the beginning of the large intestine, जोटा कि मैं आपन को इमेज रे देखौची. So this is the cecum जोटा हमरो कोन करूची ना beginning of the large intestine and receive digestive food from the small intestine. Okay. Next question. Which type of pathogen causes the waterborne disease ascariasis? तो को type रो pathogen cause करे कोन ना waterborne disease ascariasis की हबो? Options are viral, protozoan, parasitic or bacterial. This is what? Parasitic type of pathogen कोन करे ना आमर waterborne disease को सहित associated थाए और waterborne disease create करिवार main role play करे किए ना आमर protozoan. Okay, sorry, protozoan को parasite. Okay, so next देखिबा. Which of the following are flowerless plants that produce cones and seeds in which seeds are not encased with an ovary? तो
को फ्लावरलेस प्लांट आमर प्रोड्यूस करूची कोन एंड सीड आल्सो व्हिच सीड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद इन द ओवरी कोटा हवा सो ऑप्शंस आर hydrophytes, bryophytes, gymnosperms and angiosperms and the right answer will be gymnosperms. Okay, so जेमिति कि hydrophytes आपण माने जानि चंती और plants grow in the water bodies like watery condition रे जो plants grow करे we call as hydrophytes. So कहि परिबा watery place रे growth होथुबा plants. Then what are the bryophytes? Are small plants that grow in a sandy or damp place or what, or a sandy or डैम्प प्लेस रे जो सब गछ अठे छोटो छोटो ताको हमें कौन कहूचे ना जिम्नोस्पर्म. एंड व्हाट इज द एंजियोस्पर्म? ए प्लांट और ए लार्ज ग्रुप दैट कंप्राइजेस द फ्लावर्स जे कि फ्लावरिंग प्लांट को हमें कहि परिबे कोन ना एंजियोस्पर्म जा पाखरे कोन ना फ्लावर्स थिबो सीड्स थिबो जोटा कि एनक्लोज हेथिबो कहा द्वारा ना गोटे कार्पेल द्वारा. सीड रो कवर को हमें कौन कहूचे? दिस इज कार्पेल. And of course it also have flowers and seed. Okay, so what is next? This is gymnosperm plant and angiosperm plant. You can have a look here. Okay, and you can easily differentiate the different. So next, there is no vaccine for which of the following hepatitis virus? There are kind of virus. Hepatitis virus are of 4 types. These are hepatitis A, V, C and D. तो ए भितरु को virus hepatitis group of virus रो vaccine ए पर्यंत हमरा बाहरी नहीं. Hepatitis A, B, C or D. What will be? This is hepatitis C. So mane rakhibe the hepatitis C kind of virus have not yet developed the vaccine. So the kind of hepatitis A, B, C and D, like hepatitis A जोड़ा कि HAV ताको कहा जाए can spread due to contaminated food and water or close physical contact. Hepatitis B को थ्रे हुए disease is transmitted through contact with direct body fluids or sexual contact. And hepatitis C जोटा रे पर्यंत हमर कोन ना वैक्सीन बाहरिनी. HCV is contracted when contaminated blood enters the bloodstream of an uninfected person. जेते बेले जहा को भी HCV हेइथिबो जे भी हेपाटाइटिस C वायरस रे लाइक ता बॉडी रे थिबो सी जदी ब्लड देला गोटे अनइन्फेक्टेड बॉडी को देन से पुन थरे ग्रोथ करिवो से वायरस ता बॉडी रे एंड से इन दैट केस आवर वैक्सीन डेवलप हेनी. Okay, and what is hepatitis D, which is HTC, can only be obtained when a person already has hepatitis B. Okay, जा पाखरे hepatitis B already थिबो तार रीग्रोथ है कि जेमती कैंसर स्टेज 1 2 3 था एमती है कि तो hepatitis B र नेक्स्ट स्टेप इज hepatitis D. Okay, and E also hepatitis E भी अच्छी गोटे. So आपण जानिबे spreads through contaminated food or water and is commonly experienced by frequent travelers. Okay, so next question. Sleeping sickness. What? Sleeping sickness disease spread due to which of the following insect? तो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज अच्छी कहा द्वारा कोस इंसेक्ट द्वारा एटा कौन हुए ना स्प्रेड हुए? बेड बॉक्स, टेस्ट फ्लाई or loss or sand fly. This is by sets fly. So आपण मन रखी थिबे स्लीपिंग सिकनेस रु मन रखिबे कि देखंतु एथिरे सिकनेस वर्ड आसुची देन एठी बिटी के आपण को प्रोनाउंस करबा को अजीब लागुची ना
सेट्स तो एटा आपण मन रखिबे सो सेट्स फ्लाई इज the reason or is the reason of spreading what sleeping sickness disease. So what's next? Which of the following is a vestigial organ in human body? So human body re kota gote vestigial organ. What is the meaning of vestigial, guys? Vestigial means like recently आम पाखे प्रेजेंट अच्छी बट आफ्टर दिस इज नॉट ए जेनेटिकल एंड किछि टाइम पर एटा आपे गायब हो जाए आम बॉडी रु जोटा कि बैनिश हो जाए तो किछि भी रीजन नाही तार ग्रोथ हेबार एंड किसी रीजन भी हबनी तार बैनिश हेबार सो वी कैन से दिस इज वेस्टिजियल बट केमिति व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी सो ह्यूमन बॉडी रे हमर वेस्टिजियल ऑप्शन भितर कोउटा ना टेल बोन आई एम जस्ट शोइंग यू द पिक्चर दिस इज द टेल बोन tailbone give me a time आपन को वो देखो छी टेलबोन so amara end of the spinal cord there is a bone which I really don't have any use so एटा हमर कोन टेल बोन को आचे जोटा कि ह्यूमन बॉडी रे गोटे unnecessary part or you can say the vestigial fat so vestigial what is vestigial pertains to vestigial organ or structure that is rudimentary degenerated or atrophied and seemingly has lost its original function through the course of evolution so धीरे धीरे जिते बेले बॉडी रे किछि पार्ट थाए एंड धीरे धीरे तार फंक्शन हेबा बंद हो जाए किछि काम रे आसेनी जेमिति कि द अर्ली स्टेज हमर कोन ना साप मानकर गोड़ थिला बट से माने तो एमती तळे घुसरी घुसरी चलिले तो आफ्टर जेनरेशन गैप बहुत टाइम पर तांकर पाद भी कुआडे गायब हो गला सो इन दैट केस तो हमर जो सब पार्ट बॉडी रे रही जाई छि जोडा कि अनयूजुअल तो धीरे धीरे सेटा कोन हुए ना हमर डिजेनरेटेड हो जाए सो दिस इज वेस्टिजियल सो एमंग फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स हमर कोन जेमति कि अपेंडिक्स रहउछि आपण एग्जांपल ले लिखि परिबे व्हाट आर दैट कोन होइबो ना हमर अपेंडिक्स इज आल्सो वन ऑफ देन हमर बॉडी रो हेयर कहि परिबे एंड विजडम टीथ जोटा हमर कहउचे ज्ञान दांत बोली कहंती ना थट्टारे के ज्ञान दांत बोधे उठिन तमरा सो विजडम टीथ एंड हमर बॉडी हेयर these are kind of what vestigial part of the body which can be degenerated after some time okay so ahuri बहुत सारा भी अच्छी so tonsil भी is a kind of what tonsils so etc next question so which plant is called herbal Indian doctor so eta samaste bhi janithbe यार आंसर so which plant is called herbal Indian doctor options are amla mango neem or tulsi which this is amla यार किछि एक्सप्लेनेशन दरकार ही नाही as I know next देखिबा so the next question is which of the following is the waterborne disease which of the following is a waterborne disease the options are malaria typhoid measles and chickenpox कोटा रहिबो हमर waterborne disease of course none other than typhoid is spread through what contaminated water making it a waterborne disease okay while malaria and our measles and chickenpox evra kono not transmitted through the water so we can skip it so communicable disease कौन होइबा हमरो malaria HIV and chickenpox are the kind of communicable disease जो एग्जाम रे आसे
you can choose here. So what is next? Outside the nucleus, DNA is found in. So outside the nucleus, DNA is found in where? Mitochondria is the only organelles besides the nucleus that contain their own DNA. So किए हबो ना माइटोकॉन्ड्रिया जे कि कौन करे ना सेल को सेपरेट कर, तो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी कले तार ओन डीएनए इट्स ओन सेल्फ हैविंग कौन हबो ना माइटोकॉन्ड्रिया जाको कौन कहा जाए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तक कहा जाए. इट्स हैविंग ओन डीएनए व्हिच इज माइटोकॉन्ड्रियल DNA. And what is Golgi bodies? Golgi bodies, apparatus helps in what? Storage and secretion of the protein. Storage and secretion of the protein. So what is ribosome? Is a we can say is a protein factory in the cell. Or what is endoplasmic reticulum? Is a network or tubes. तारो कौन काम is a, you can say it is the कौन mitochondria, Golgi bodies, ribosome, and then endoplasmic reticulum. We can say it is the largest organelle in the eukaryotic cell. Eukaryotic cell ro सबुठु largest organelle आमे काहा कहि परिबा ना endoplasmic reticulum is the largest organelles among the eukaryotic cell. So this is the mitochondrion and it's having its own DNA. देखो ये अच्छी जोटा कि कौन mitochondrion DNA. Okay. So what is next? This is oxyntic cell is meant for the secretion of oxyntic cell is meant for the secretion of what? Options are lactic acid and pepsin and enterokinase and hydrochloric acid. So oxyntic cell also known as what? Parietic cell. Oxyntic cell exam रे एमती भी आसी पारे जदि parietal cell आसिला then आपण माने confuse हेबेनी. Oxyntic cell is also known as what? Parietic cells. Parietal और parietic का आपण किछि भी कहि परिबे एग्जाम रे जो अकॉर्डिंग आसीबो आपण confuse हेबेनी. ओके and this cell रो काम कोन? These are the specialized cells in stomach lining and secrete what? Na secrete hydrochloric acid. कोठी थाए between the stomach lines. Okay. And obviously hydrochloric acid stomach line रोची माने कौन रोची? से तारो एसिड रो जो pH को बैलेंस करी रखुची. It balances the pH value of acid.
who acid? Hydrochloric acid. Okay. Next देखिएगा. Okay. So pepsin जानिबे, lactic acid you all knows जोटा कि कौन secreted by the stomach and it is a byproduct of anaerobic acid. Okay, what is anaerobic metabolism रो byproduct होउची कौन ना हमरो lactic acid. So what is pepsin? Pepsin is a digestive enzyme जोटा मैं आपको कहली that breaks down protein into smaller what kind of peptides. Protein जोटा हमको break down करे कहा को digestive enzyme that break down proteins into smaller peptides जोटा कि हमको proteins into okay. Next देखिएगा. This is the image where parietal cell जो हमारा secrete parietal cell जो हम कौन hydrochloric acid secrete हुए. This is inside the okay. So next देखिएगा. Olfactory receptors are located in our whisk pad. So olfactory receptors are located in our whisk pad guys, bad body ro. Nose, tongue, ears, eyes. Tongue ta nahi, ears ta nahi, eyes bhi nahi. तो कोटा हबा? The right answer will be what? This is nose. So olfactory receptors रा हमार काम कौन ना से detect करिवो orders को. Orders that doesn't mean ODORS वाला नहीं, ODOUR वाला orders. Okay, detect करिवो कहा को orders and एटा कोठी present रुहे located in olfactory epithelium. Okay, olfactory epithelium in the upper part of the what? In the upper part of the nasal cavity. जोटा कि मैं आपन को इमेज रे देखौछ. Okay, so एटा आपण देखंतु हमर olfactory tract रहूची, then nasal cavity तार ऊपर हमर कोन रहूची ना हमर olfactory nerves, then olfactory valve, then olfactory tract. Got it? And एटा कौन करे ना these receptors bind to odor molecules and send signals to the brain and allowing to कौन perceive and identify the smell. को type रा smell हमें like आसुची ताको हमें केमिति recognize करूचे by the help of what? By the help of olfactory receptors. So what is next? So this is the cuticle is absent in. So the cuticle is absent in for root, fruit, leaf or stem. Options are the cuticle is absent in root. What is the work of root? Roots are what? Roots are specialized for absorbing water and nutrients. Absorbs water and nutrient from the soil.
So here the cuticle is absent, but fruit, leaf and stem, both of, like 3 of them having cuticle. Okay. फ्रूट रे हमें देखि परिबे लाइक फ्रूट्स टिपिकली हैव ए क्यूटिकल जे कोन करे ना रिड्यूस करे वाटर लॉस को यदि फ्रूट रे हमर वाटर लॉस हे जिवो देन फ्रूट रो ग्रोथ केमिति हबो सो क्यूटिकल रो काम कोन फ्रूट रे ना रिड्यूसेस वाटर लॉस एंड लीफ रे हमर कोन काम लीफ रे तो सबटु वाइटल प्ले रोल प्ले करूची जेमिति कि मिनिमाइज करूची कोन ना वाटर लॉस थ्रू व्हाट थ्रू ट्रांसपिरेशन what minimize the water loss and stem रे कोन कहूची like particularly in aerial parts कोठी ना aerial parts plant रो aerial parts रे से कोन कहूची ना protection दोउची and prevent करूची water loss रो it protect and prevent water loss from the aerial part of the stem. So these are the plant, the root system and the shoot system. So next, which of the following cell organelle is present in both plant and animal cell? Which of the following cell organelle is present in both plant and animal cell? किए रहुची like both plant and animal cell present रहुची जोटा कि हमारा word this is mitochondria. Mitochondria जोटा कि मैं आपको कहली word this is the powerhouse of the cell. Okay. And mitochondria कौन करे ना this mitochondria is responsible for generating energy into what in the form of ATP, generating energy in the form of ATP. Adenosine triphosphate. Okay. And what are the use of lysozymes? Lysozymes are primarily कोठी present थाए ना इटा हमारा animal cell रे present थाए हमें भी देखु जे ना कोटा plant cell रे कोटा animal cell रे कोटा both रे so the only mitochondria is present in both plant and animal cell. Animal cell हमारा कौन ना lysozyme हमारा animal cell रे थाए and cell wall and chloroplast ए दीटा हमारा only plant cell रे देखिबा को मिले. Okay. Okay. So next देखिबा next रहुची हमारा plant cell and animal cell and the tiny difference you can see over here कौन कौन रहिची जेमति कि cell wall is present in plant cell but absent in animal cell. Okay. जेमति chloroplast and हमरो रहिला कोन chloroplast and हमरो endoplasmic reticulum and etc. ए सब हमरो आपण देखि देबे कोटा कोटा प्रेजेंट रहउची हमरो प्लांट सेल रे आ कोटा एब्सेंट रहउची एंड एनिमल सेल रे कोटा प्रेजेंट रहउची एंड कोटा एब्सेंट रहउची. सो टीयर्स
आज लास्ट क्वेश्चन कौन रोची tears in the eyes are produced by which of the following glands तो आम आखिरे जो लुहटा डेवलप हुए लुहटा क्रिएट हुए तो को ग्लैंड रू सेटा स्टार्ट हुए तो ऑप्शंस आर द lacrimal gland thyroid gland pituitary gland and hypothalamus देखो ऑड एंड आउट आपण इजीली करि परिबे pituitary नुह thyroid नुह hypothalamus भी नुह so the option will be what lacrimal gland and a lacrimal gland कोठी प्रेजेंट रहउची and responsible कोठी पई होउची the glands are responsible for producing what tears in the eyes जेमति कि क्वेश्चन ने कहिची and एटा कोठी ना upper outer corner of the eye socket तो आमर आई रो इमेज रे देखौची ए अपर कॉर्नर रे आमर कोठी अछि देखंतु लैक्रिकल ग्लैंड जोटा कि आमर कोठी लैक्रिमल एगुडा सब सो अपर आई कॉर्नर रे आमर कोन रहउची ना लैक्रिमल ग्लैंड जो थ्रू आमर कोन ना टियर बाहरुची सो आपण कहि परबे एटा कोठी प्रेजेंट रहउची ना अपर आउटर कॉर्नर both of the eyes okay or you can say both of the eye socket and if you know about it thyroid gland amara kothi rahuchi the thyroid gland is located in the neck and responsible for producing what producing the hormones like thyroxine which regulated metabolism thyroid gland कोठी हमर रुहे neck रे रुहे and एटा प्रोड्यूस करे कोन ना thyroxine hormone okay so pituitary gland where it is present pituitary gland is located the base of the brain and we can say this is the master gland exam re say which gland is known as master gland of the body this is pituitary gland and then hypothalamus gland the hypothalamus कोठी हमर रहउची ना पार्ट ऑफ द ब्रेन एटा कहार पार्ट एटा रहउची हमर ब्रेन ना पार्ट सो ब्रेन पार्ट रे कोन करूची ना इट्स रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर हंगर एन हमर आउ कोन रहउची आमर थर्स्ट इमोशन ए सब आमर कोन ना हाइपोथैलेमस ग्लैंड रू डेवलप होतुबा हार्मोन द्वारा होची so these are the important 25 question we have discussed आपण मानकु जदि बैच एनरोल करिबार अछि देन यूज एसएसपी लाइव कोड एंड आपण बैच एनरोल करि परिबे सो दैट आपण माने डिटेल एलाबोरेशन सहित लाइक एठे हमें कोन ऑप्शन थ्रू रे जाई कि एलाबोरेशन किछ देखिने बट आपण माने बैच एनरोल कले सब जिंस क्लियरली विथ फुल क्लैरिटी आपण माने जानि परिबे सो यूज एसएसपी लाइव for batch enrollment ठीक है so end of the class thank you so much have a good evening and आपनकर प्रिपरेशन समस्तिंकर भलरे चालू अपकमिंग ASO and SI and our CGL पई all the very best thank you so much